Hello everyone, a very good afternoon to all of you. This is Ashwin Ramani here, research analyst at SBI Securities. I hope I'm audible and I hope you all are able to see my screen. If you all can give me a heads up in the chat box. अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो. So that I know you all are with me live in the session. If you all can give me a heads up in the chat box, we just wait for a minute and then we should be good to go. Sudhakar ji, namaskar, good afternoon. Pallavi ji, hello. Santosh ji, hi. Parmeshwaran ji, good afternoon. Okay, Purit ji, everything is okay, great. Guys, आप लोगों को पीछे से कुछ ड्रिलिंग का आवाज आ रहा है कि सिर्फ मेरा ही आवाज सुनाई दे रहा है? श्रीधर जी, हाय, गुड आफ्टरनून. इज देयर एनी डिस्टरबेंस? एक ड्रिलिंग साउंड आ रहा है या नॉर्मल है ऑडियो? Because there is some drilling work that is going out there. And actually, I can hear the drilling sound a lot. So I just want to know if y'all are able to hear that. No drilling? Okay, then it's good. I think so. परेशानी सिर्फ मुझे ही होगी फिर. Okay, great. So on that note, Vinay ji, good afternoon. So let us start off with the mid-market session today. So first up, with an update on the global markets first. So Dow Jones closed 0.07% higher. S&P 500 gave a flat close. It was up 0.10%. Nasdaq was up 0.14%. So again, nothing major, no significant movement in the US markets. Almost all the three indices had a flat to positive close in yesterday's session. Dow Jones is at 0.13% higher, so we can expect another flat start to the US markets today. If you look at the European markets, Germany is up 0.8%. London was up 0.8% again, and France was up 0.54%. So again, Europe markets had a relatively stronger closing as compared to the US markets. If you look at the Euro Stocks 50, that was up 0.08%. If you look at the Asian markets, majority of the Asian markets are closed due to Lunar New Year. So China will be closed for the next, I think, until February 23rd for the next 5 days. Only Nikkei is, I think only Hang Seng is up. Hang Seng is up 0.52%. You can see China is closed, Nikkei is closed, Kospi is closed. So majority of the Asian markets, so it's like a new year for them, Lunar New Year. So most of the Asian markets will be closed. If you look at the Indian markets, Sensex is down 0.04%. Again, another flat day for us. And Nifty is at 25,720, again down 0.02%. So another, we are just down 5 points. So another flat day in Nifty as well. If you look at the macro indicators, so if you look at dollar index, so yesterday we could see dollar index attempting to go past its 20-day EMA. But वहाँ से एक selling आ गया, and again it is now closed below the 20-day EMA here. So till the time dollar index is below the 98 mark, the overall trend is likely to remain bearish. If you look at dollar, $1 is around 90.6 rupees now. So absolutely flat range as far as dollar by rupee is concerned. I think we need dollar to move below 90. I think any breakout above 90.8, maybe above 91, that can make the dollar stronger as compared to the rupee. If you look at crude oil, so crude oil majorly has been consolidating in a range now, $70 on the upside, $65 on the downside. So this $5 a barrel range is majorly where crude oil has been trading in. The overall trend is still sideways to bullish. I think any move above $70 that could push the crude oil prices even higher. If you look at the yields part, so US 10-year yields, again, we saw how the 10-year yields in US kind of, there was a free fall here until almost 4.02%. So that's a good sign. Even Japanese yields are almost, after consolidating, it has gone down to 2.14% now.
While Indian yields, I think it took support from the 50-day EMA here, and then there is a small uptick. It's at around 6.67%. Ideally, the yields needs to go down even more. At least we should come back to 6.55, 6.50 levels in the short term. If you look at India VIX, so India VIX cooled off almost 5% yesterday. Today it is down around 3%. So nothing major to worry on. I think the volatility there is, less volatility in the markets. Absolutely range bound intraday movement, and VIX is down around 3% today. If you look at gold again, you can see majorly in a range here. I feel for gold to see, I think for gold to move up higher again, it needs to break the $5,125 an ounce mark. I think any move above $5,125 an ounce, that could push the gold prices higher. On the other hand, if we look at silver, so silver is under pressure. I feel till the time we don't take out $90 an ounce in silver, the overall trend is likely to remain bearish in silver as well. If you look at the FII positioning, so some respite in yesterday's session. FIIs, after 2 days of selling, having sold around 8,368 crores. They were net buyers yesterday. 995 crores का net buying किया था. But जो last week जो एक अच्छा buying momentum एक build-up हो रहा था FIIs के through, वो ये वाले sell figure से that has kind of hit a speed bump now. So I think we'll have to wait and see as to what the FIIs do in the coming sessions. Ideally, they should carry on the buying, but I think post budget there was some short covering seen as well. Long short ratio 11% से almost 21% तक आ गया है. But अगर आप देखोगे पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से, वही हम 20 to 22% बैंड में लॉन्ग शॉर्ट रेशियो मूव हो रहा है. सो आई फील वो जो शॉर्ट कवरिंग जो स्टार्ट हुआ था बजट के बाद, इंडिया यूएस डील के बाद, दैट इंटेंसिटी हैज आल्सो काइंड ऑफ tapered off for now. And that is the reason why we are seeing absolutely zero movement in our markets. We are just seeing only range bound days. There is only gap up, gap down, and then for the whole of the day, Nifty remains in a sideways mode. So FI sentiment, I mean, still, it is bearish. The buying intensity needs to increase. If you look at the sell figures, they were very huge. The buy figures are not as significant as compared to the sell figures here. So we'll have to wait and watch and see what the FIIs do in the coming sessions. If you look at Nifty की बात करें, again you see again absolutely range bound. So we started somewhere around the previous days high of, if you remember, कल हमने एक लाइन ड्रॉ किया था. अभी तक वो गैप पूरा फिल हुआ नहीं है. 25,790 25,800 तक वो गैप है. बट निफ्टी ने कल के हाई के आसपास ही 25,760 25,770 जोन, वही से एक हाई बना के हम नीचे आ गए. और नीचे की तरफ this the previous days low of 25,660 25,650, that is acting as a strong support for Nifty. So I feel probably on an intraday basis ये 25,650 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा. और ऊपर की तरफ ये जो 25,770 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा. जब तक निफ्टी यही बैंड में है तब तक ओवरऑल ट्रेंड इज लाइकली टू रिमेन साइडवेज. बट इफ वी ब्रेक अबाउट 25,770 25,780 के अगर हम ऊपर जाते हैं, देन हो सकता है ये पुल बैक एक्सटेंड होते होते एटलीस्ट प्रॉब्ली एक 80 to 100 पॉइंट्स मूवमेंट मिल सकता है ऑन द अपसाइड. But for that, Nifty has to break about 25,760 25,770. That's a key level to track in Nifty. And if you look at the daily chart, again अगर आप देखोगे एक small body candle बना है with a relatively long lower wick, that indicates that एक lower level से एक strong buying interest नजर आ रही है Nifty में. But this needs to sustain only after we move about 25,760 25,770. I think we can expect a further up move coming in Nifty. If you look at Sensex, so Sensex का भी pretty similar story है. Sensex भी अगर आप देखोगे, support was around 83,170 83,200 mark. हम वही से एक steady buying interest नजर आ रहा है Sensex में.
ऊपर की तरफ सेंसेक्स ने वहीं पर रेजिस्टेंस लिया जो पिछले दिन का हाई था। अगर आप पिछले दिन का हाई देखोगे अराउंड 83,600 के आसपास था, और आज पहले कैंडल में ही 83,600, आई मीन हाई था 83,604 का, बट हम वहीं से नीचे आ गए। सो आई फील फॉर अगेन, जैसे हमने 25 ये वाला जो जोन देखा था हमने 25,770 निफ्टी में, फॉर सेंसेक्स आई थिंक दैट जोन विल बी 83,600। आई थिंक अगर हम 83,600 पार करते हैं, तो maybe we can expect another 150-200 points move on the upside. While नीचे की तरफ 83,200, that zone is likely to act as a strong support for Sensex here. So I think pretty similar chart structure as compared to Nifty. Now, if you look at Bank Nifty I think might be breaking out now. अगर हम Bank Nifty देखें, सो बैंक निफ्टी एक आप बोल सकते हो एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसे पैटर्न है, जहाँ पे एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक हायर लो स्ट्रक्चर है. I mean, not a ascending triangle pattern. It just looks like an ascending triangle pattern. I think Bank Nifty has just given a breakout. 61,300 इसका एक strong रेजिस्टेंस था. अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे मान लो आगे अगला 10-15 मिनट अगर इसी लेवल के ऊपर सस्टेन करता है 61,300 के ऊपर, आई मीन थैंक्स टू द रैली दैट वी आर सीइंग इन पीएसयू बैंक्स. हमने 2 दिन पहले पीएसयू बैंक्स देखा था, जैसे इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र. ऑल दीज बैंक्स आर डूइंग वेल. आई थिंक सम प्राइवेट नेम्स लाइक एक्सिस बैंक, उसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है. इसके लिए आप देख रहे हो बैंक निफ्टी इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर्ड टू निफ्टी एंड सेंसेक्स. सो आई थिंक इफ बैंक निफ्टी होल्ड्स अबाउट 61,300 at least for the next 10-15 minutes and it moves above 61,350, then chances are that we can see 100-150 points movement on the upside. But I think on the downside, 61,200, 61,250, that is where the support is placed for Bank Nifty. Now talking about the key sectors to watch as per RRG, अगर हम RRG की बात करें, so clearly there is, अगर हम लैगिंग क्वाड्रेंट में, अभी भी आईटी लैगिंग क्वाड्रेंट में ही है. सो आई थिंक भले ही एक पुलबैक हमें देखने को मिला है आईटी में, I still feel it's better to stay out from IT for now because we haven't seen a strong reversal sign in IT. And अभी भी वो lagging quadrant में है. So फिलहाल के लिए momentum भी नहीं है, strength भी नहीं है IT index में. दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो I think the strongest looking sector for now is PSU Bank for me. If you see PSU Bank weakening quadrant में था, अगर आप देखोगे the head is almost moving towards the leading category now. And काफी sharp up move नजर आ रहा है. So PSU banks, I think that should be one sector you should be having in your radar. Apart from that, अगर आप देखोगे Nifty Bank overall is probably moving from weakening quadrant to your leading quadrant here. So maybe some pockets of private banks are also doing well. We'll see that some of the names. Apart from that, if you see CPSE avoid करना, PSE avoid करना, metal भी avoid करना, because इनमें strength है but इनमें फिलहाल के लिए momentum नहीं है. So that is what weakening quadrant signifies. Financial services is also good. Financial services also उसका head देखोगे, it is kind of moving higher. So financial services and PSU banks, I feel these are the two strongest looking sectors out there. Even infrastructure is positive, manufacturing is positive, but there is some profit booking that we are seeing in this space. अब देखो infrastructure का जो head है वो नीचे आ गया है, oil and gas का head नीचे आ गया है, manufacturing is slightly tilted down, auto is also slightly tilted down, media again there are no strong sectors, consumer durables भी देखोगे तो it's slightly tilted down, and realty is also down here. So I think out of all the sectors, I feel only a couple of sectors, one would be PSU and other one is financials. But the one sector that is again stronger as compared to PSU and financial, that is your healthcare space. Like we've been discussing, कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि pharma looks like it's on the verge of a consolidation breakout. So pharma is still in the improving quadrant, but if you look at healthcare index, that has kind of swiftly moved from improving to leading quadrant here, and it is kind of pointed upwards. So I feel top 3 strongest looking sectors right now, one would be Nifty Healthcare, then the next one would be PSU banks, and the next one would be financial services. So these are the 3 sectors that are strongest looking sectors out there. Avoid all the other sectors, especially IT में तो definitely avoid करना फिलहाल के लिए.
बिकॉज भले ही लोअर लेवल से एक पुल बैक आया है, बट दैट पुल बैक इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग टू से कि हाँ अभी एक बॉटम हो गया और यहाँ से ही हम ऊपर जाएंगे. Sectors तो देख लिया. Now let us see some of the stocks from these particular sectors. The first sector that I want to talk about is PSU Bank. So clearly अगर हम ratio chart देखें PSU Bank by Nifty का, that is clearly moving upwards. It's in a rising mode that clearly suggests that PSU Bank में strength भी है, momentum भी है. A couple of names from the PSU space. One would be Bank of Maharashtra. I think Bank of Maharashtra has given a fresh breakouts. Why should you be looking for such breakouts is because sector support है PSU बैंक से. हमने RRG भी देखा, रेशियो चार्ट भी देखा, मोमेंटम भी है, स्ट्रेंथ भी है और चार्ट में एक अच्छा क्लीन ब्रेकआउट भी मिला है. सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इट नीड्स टू होल्ड अबाउ 67.5. RSI 60 के ऊपर है. DI plus has crossed over DI minus and MACD has also crossed over the signal line here. So I feel as long as it stays above the 68 mark, the overall trend is likely to remain positive for Bank of Maharashtra. Apart from that, even Indian Bank has given a fresh breakout. Just like आप Bank of Maharashtra का chart देखोगे, वैसे Indian Bank में भी आप एक fresh breakout आया है यहाँ पे. So the major resistance zone for Indian Bank is around 915. As long as Indian Bank stays above 915, the overall trend or the structure is likely to remain positive for Indian Bank as well. The next sector again, it's financial services. Like I said, even financial services is placed in the leading quadrant of RRG. So अगर हम financial services की बात करें, the one particular stock that I want to talk about is PFC, that is Power Finance Corporation. So PFC kind of gave a strong move. यहाँ पे एक downward sloping trendline breakout हमें मिला था. It was not able to sustain. Then there was some profit booking, and this 20-day EMA acted as a strong support for PFC. And again, the stock has kind of started moving higher. So as long as it holds above 400, 405, I think the overall trend is likely to remain positive for Power Finance Corporation as well. Apart from that, even Bajaj Finserv, not Bajaj Finance, but अगर हम Bajaj Finserv देखें, so Bajaj Finserv kind of, it was moving in a consolidation range. ऊपर की तरफ 2050, नीचे की तरफ 1990. This was the range in which Bajaj Finserv was moving in. And yesterday today we got a breakout, though there was some profit booking at the higher levels. But if Bajaj Finserv is able to hold about 2050, then chances are that even it can continue its support towards 2080 levels in the short term. But its immediate support lies in 2020. That is where the support is placed for Bajaj Finserv. Apart from that, like I said, even Axis Bank looks very good. अगर हम Axis Bank देखें, it had slipped below its 20-day EMA. Then there was a strong candle that was formed on the 16th of Feb. And again, there is a strong follow-through movement that we are seeing in Axis Bank. I mean, that is one of the reasons why, अगर आप देखोगे, Bank Nifty strong है, because PSU banks का तो support है ही, plus there are some pockets of private banks that are also doing well. So Axis Bank 1373, I think as long as it holds above 1330, 1335, the overall trend looks positive for Axis Bank as well. Not pharma is in the improving quadrant, but I think apart from pharma, a lot of pharma names are also doing well. हमने इसके पहले, अगर आपको याद है, 2-3 सेशन पहले हमने एक्सटेंसिवली फार्मा स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किए थे. बट आई फील मोर देन फार्मा, योर हेल्थकेयर, आई थिंक देयर इज वन हेल्थकेयर स्टॉक दैट इज काइंड ऑफ डूइंग वेल. वन इज लॉरस लैब्स. गाइस, आई विल टेक योर क्वेश्चन टुवर्ड्स द एंड. Q&A में मैं आपका क्वेश्चन आंसर करता हूँ. Now, if you look at Laurus Labs, I think ये सुधाकर जी का favorite stock है. So Laurus Labs again, it was moving in a tight range. You see, almost 5 doji candles back to back: doji 1, doji 2, doji 3, doji 4. Almost 4 doji candles back to back, and seems like now Laurus Labs is kind of breaking out. It needs to close above 1025, 1030. I think if it gives a strong close above 1025, 1030. Then chances are that even Laurus Labs can move higher towards 1060 in the short term, with around 1000 acting as a strong support for the stock. Then there are a couple of FMCG names also that are doing well. अगर आप देखोगे FMCG, so FMCG is also
जो कि एक इम्प्रूविंग क्वाड्रेंट में था, वो भी अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है. मे बी सून इट माइट कम इन द लीडिंग क्वाड्रेंट एज वेल. But couple of names from the FMCG, one I would say, will be Marico. पल्लवी जी मैं बोलता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन एंड आंसर के टाइम में आंसर करता हूँ. So if you look at Marico, Marico again has given a fresh breakout today from its previous high. So 780 is where the previous high was placed for Marico. Again, RSI has swiftly moved higher. The DI plus has crossed over DI minus, and even MACD is above the zero line here. So as long as Marico stays above the 780 mark, I think the overall trend is likely to remain bullish for Marico as well. And another stock from the FMCG space, I would say it's Britannia. If you look at Britannia Industries, the high year we had a gap up, then Britannia kind of consolidated in a range. And I think again it looks like Britannia is kind of moving out from its range here. So 6150 is a strong resistance for Britannia Industries. And as long as Britannia is able to hold above 6150, if we get a strong close, I think then chances are that it can move towards 6285, 6290 levels in the short term. So 6150, that's a key level to watch out. Now we can also look at the heat map for the day. So अगर हम heat map की बात करें, let's look at Nifty 50. So you can clearly see there is heavy bleeding that is going on in the IT space. I think that's the worst performing sector for the day. Infi, HCL Tech, Tech Mahindra, Wipro, Eternal, all are down in the range of 2%. No support from oil and gas, Coal India, ONGC is also down. Some support from Reliance. Reliance is up 0.53% higher. If you see some pockets of, I think only Axis Bank is doing well, 1.2%. And HDFC Life is up around 2% here. Metal is just holding on to the higher levels. Some traction in the FMCG space. Adani Ports is down 1%. No movement in the auto space. Adani Enterprises is down 1.79%. Bharti Airtel is flat. So if you look at the major heavyweights, HDFC, ICICI Bank, Infosys, Bharti Airtel, and Reliance. Reliance is only up 0.53%. So major heavyweight ka support nahi hai. And IT is one sector that is clearly, you should be avoiding that sector for now. Now that was a wrap of today's bit market. Now a couple of more things to go. So we'll have the concept session now, and then I will take up your question and answer. So today what we will learn is, I hope you all are following the fundamental checklist. So हमने आज तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है फंडामेंटल सेशंस में, क्या क्या देखना चाहिए, what are the basic checks that you need to do. So first is you should be looking at the revenue growth, at least last 5-10 years trend आपको देखना चाहिए, growing होना चाहिए. Secondly, you should be also be looking at the profit growth, whether company is making sufficient profits. Last 5 years, 10 years का trend क्या है कंपनी का, वो देखना चाहिए. फिर हमने देखा था क्या कंपनी के पास कैश फ्लोज है, स्पेशली ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, क्या वो पॉजिटिव है. कल अगर आपको याद है हमने एक आईटीसी का एग्जांपल लिया था. The amount of cash flows that company has, I mean, it's tremendous. So cash flows, again, operating cash flows, that should be positive. Then we saw a couple of ratios. हमने देखा था ROE का क्या trend है. You should look at last 5 years trend for the ROE, whether it's growing. Then हमने देखा था कि ROCE का क्या trend है, return on capital employed. अगर total equity debt दोनों को अगर हम बिजनेस में लगाते हैं उसमें क्या रिटर्न्स है. देन अगर आपको याद है हमने देखा था EBITDA मार्जिन, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसका लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड क्या है हमने देखा था. EBITDA ऑपरेटिंग लेवल में प्रॉफिट होना चाहिए कंपनीज का, बिकॉज अगर वाई पे अगर लॉस है तो कहाँ से इंटरेस्ट भरोगे, कहाँ से टैक्स दोगे, कहाँ से आप डिविडेंड्स दोगे, कहाँ से प्रेफरेंस डिविडेंड्स दोगे, कहाँ पे इक्विटी वाले लोग के लिए कुछ पैसा बचेगा. इक्विटी वाले लोग के लिए नहीं बचा तो रिजर्व्स कहाँ पे होगा, रिजर्व्स ही नहीं होगा तो एक्सपेंशन प्लान्स कैसे होगा. सो आइडियली EBITDA मार्जिन शुड बी पॉजिटिव. देन हमने ये भी देखा था आपका NPM, दैट इज नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी क्या हेल्दी है. एटलीस्ट यू शुड बी लुकिंग एट लास्ट 5 years to 10 years ट्रेंड. आई थिंक 5 years तो मिनिमम ट्रेंड आपको देखना ही चाहिए कि हाउ द ट्रेंड हैज बीन मूविंग इन. सो हमने EBITDA देखा, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखा.
देन आपको याद है हमने 3 वैल्यूएशन रेशियोज किए थे. वन इज पी रेशियो हमने देखा था, वेयर वी कंपेयर स्टॉक पी विद इट्स इंडस्ट्री पी. आइडियली ये लो रहना चाहिए. देन हमने देखा था प्राइस टू बुक वैल्यू. हमने देखा था कि बुक वैल्यू क्या होता है, आपका टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स, दैट इज योर इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यू गेट बुक वैल्यू पर शेयर. फिर प्राइस टू बुक वैल्यू वी कंपेयर इट विद पीयर्स. अगर आपको याद है बैंकिंग एसेट हेवी कंपनीज में हमें यूज करते हैं. फिर हमने देखा था कि प्राइस अर्निंग्स इज नॉट एन आइडियल मल्टीपल, आइडियली यू शुड एडजस्ट प्राइस अर्निंग्स विद ग्रोथ एज वेल. तब हमने पेग रेशियो देखा था कि हमने, अगर आपको याद है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ग्रोथ से हम डिवाइड करते हैं प्राइस टू अर्निंग्स को. बट एक एग्जांपल हमने किया था रियल एस्टेट का, अगर आपको याद है, प्रेस्टीज, डीएलएफ एंड लोधा का. सो पेग रेशियो आइडियली आपका कम होना चाहिए. फिर हमने देखा था कि आइडियली अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, यू कैन प्रेफर इन्वेस्टिंग इन डेट फ्री कंपनीज. बट अगर कोई कंपनी का डेट है, देन इट शुड, आपको दो चीज और भी देखना चाहिए. क्या डेट है तो क्या रेवेन्यूज भी ज्यादा रेट से ग्रो हो रहे हैं? अगर रेवेन्यूज भी ग्रो हो रहे हैं तो क्या प्रॉफिट्स भी ग्रो हो रहे हैं? अगर प्रॉफिट्स भी ग्रो हो रहे हैं तो क्या कैश फ्लोज भी इनफ जनरेट कर रहे हैं कि नहीं? दिस is one important thing. It should not happen that companies only piling up debts but revenues और profits में translate नहीं हो रहा है. So debt, it's not I mean आप, it's your investor preference. अगर debt free में तो debt free. Secondly, अगर debt है, because lot of companies will require debt. I mean debt होना कुछ बुरी बात नहीं है, बट वो डेट को प्रॉपरली यूज कर रहे हैं कि नहीं, तो डेट दैट शुड ट्रांसलेट इनटू रेवेन्यूज, दैट शुड ट्रांसलेट इनटू प्रॉफिट्स. केपेक्स अगर बरोबर से अगर हुआ है तो केपेक्स यूजुअली 2-3 साल लगता है उसका आपको रिटर्न्स देखने के लिए. सो यू शुड बी लुकिंग एट डेट्स. देन हमने कल एक पढ़ा था प्रमोटर होल्डिंग. आपको याद है, हाई प्रमोटर होल्डिंग भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट कुड प्रॉब्ली दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस फॉर अ रेड फ्लैग. बिकॉज अगर प्रमोटर अपना, वन मोर थिंग दैट आई मिस्ड आउट ऑन येस्टरडे, एटलीस्ट प्रमोटर का जो होल्डिंग है ना, वो अपना स्टेक बेचना नहीं चाहिए कंपनी में. लेट्स से अ प्रमोटर इज होल्डिंग 55%. आई मीन हु knows about the company better than a promoter? जो मालिक है उसको ही कंपनी के इन एंड आउट्स के बारे में मालूम होगा, राइट? अगर कोई प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ाते जा रहा है, देन वो बताता है कि वो प्रमोटर को उसके कंपनी में खुद कॉन्फिडेंस है उसके फ्यूचर पोटेंशियल में. बट अगर आप देख रहे हो प्रमोटर खुद अपना स्टेक बेचते जा रहा है, मतलब एक, शायद एक आप सोच सकते हो कि प्रमोटर अपना स्टेक क्यों बेच रहा है, क्या उसको खुद के बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं है? और इट कुड बी सम अदर रीजन. बीच में आपको याद है ओला का प्रमोटर भावेश अग्रवाल हैड सोल्ड ऑफ सम शेयर्स बिकॉज वो कुछ डेट उनको रीपे करना था, पर्सनल डेट रीपे करना था, सो ही हैड सोल्ड ऑफ सम स्टेक्स देयर. बट अगर आप देखोगे उसके बाद आप देखोगे ओला इलेक्ट्रिक का प्राइस ऑलमोस्ट से डाउन ही हो गया था यहाँ पे. But that should also, you should be checking what the promoter are doing with their stakes. Extremely high promoter holding नहीं होना चाहिए. और सेकेंडली हमने कल प्रमोटर के साथ ये भी देखा था कि क्या प्लेज है कि नहीं. आइडियली प्लेज फ्री होना चाहिए. अगर प्लेज है तो आपको देखना पड़ेगा ये लोन जो लिया है प्लेज करके, वो किसके लिए लिया है, इसका पर्पस क्या है, क्या करने वाले हैं लोन से. अगर ये लोन लिया है तो उनका डेट रीपेमेंट शेड्यूल आपको एक बार देख लेना चाहिए कि वेदर कंपनी इज पेइंग देयर डेट्स ऑन टाइम. बिकॉज अगर इफ यू फील ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे डेट पाइल अप हो गए, रेवेन्यूज नहीं आ रहे, प्रॉफिट्स नहीं आ रहे, कैश फ्लोज नहीं है, तो चांसेस ऑफ डिफॉल्ट बिकम्स मच हायर. एंड डिफॉल्ट होने पर वो जो प्लेज वाले शेयर्स है, वो बैंक्स जहाँ पे भी कोलैटरल रखा है वो बेच के निकल जाएंगे. So these are, I think, so many pointers that you can also yourself see at your end. हम daily एक एक concept हमने पढ़ा है. आज हम लोग देखेंगे प्रमोटर के साथ साथ और एक आज जो ट्रेंड आप देख सकते हो, which is very important, which is what is the FII percentage holding in that stock or the company. So जैसे हम प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं, वैसे आपको FII होल्डिंग भी देखना है. क्यों देखना है? बिकॉज ऑब्वियसली दे आर द वंस हु ड्राइव who bring in the liquidity in the markets. मतलब अगर FII का ही पैसा अगर लगा है कंपनी में, वो ज्यादा नहीं होगा, आपको ज्यादातर यू विल सी द रेंज ऑफ 5 to 10%. बट इफ FII यूजुअली आपको ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही देखने मिलेगा. अगर मान लो आज अगर कोई FIIs ने कोई स्टेक परचेस किया है, तो ये पूरे क्वार्टर के एंड के बाद ही आपको पता चलेगा. आपको ये हर दिन पता नहीं चलेगा कि FIIs ने ये स्टॉक खरीदा है या वो स्टॉक खरीदा है. सो यू हैव टू लुक एट क्वार्टर बाय क्वार्टर ट्रेंड्स की. क्वार्टरली व्हाट आर द FIIs डूइंग, आर दे इंक्रीजिंग देयर स्टेक्स एवरी. अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर अपना वो स्टेक्स बढ़ा रहे, तो एटलीस्ट उनको कुछ तो वो जानते हैं जो शायद रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी डोंट नो. बट ये देखना कि FIIs लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेच तो नहीं रहे,
कि अगर मान लो 5% है FIS का स्टेक, then they made it to 4.7, then they made it to 4.4, then they made it 4, then they made it 3.5. ऐसा डिक्लाइनिंग ट्रेंड नहीं होना चाहिए FIS का. सो ऑलवेज सी कि FIS का हाथ है, कि अगर FIS का हाथ है उनका ट्रेंड क्या है. Because obviously having a FII is backing in a company, भले उनका stake is very less, it would be hardly around 10% mark, but having that FII stake gives you that added confidence कि okay, foreign investors का भी यहाँ पे पैसा लगा हुआ है. Exactly, SEBI का norms is 75% का, absolutely, but despite उनको एक ये भी दिया गया था कि over a period of time you have to get it down to 75%, but there are still a lot of you'll see a lot of companies where the promoter holding was somewhere around 85-90%. वो नहीं होना चाहिए, because extremely high promoter holding, I mean, that is concentrated in the hands of promoter, right? So if they sell off a part of their stake, I think that could cause fall in the prices here. So apart from that, आपको एक FII का stake भी देख लेना है. So we will add, there are few more things to go. जैसे एक डिविडेंड यील्ड हो गया, वो हम लोग देख. हाँ, इसके देयर इज वन मोर थिंग दैट आई मिस्ड एडिंग. हमने यहाँ पे अर्निंग्स पर शेयर भी देखा था, अगर आपको याद है. द टोटल अर्निंग्स दैट इज अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब प्रेफरेंस वाले लोग को डिविडेंड देने के बाद जो अर्निंग्स बचता है, वेदर EPS का ट्रेंड, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज द किंग, राइट. अगर द कंपनीज नीड्स टू मेक अर्निंग्स, प्रॉफिट्स ग्रो होना चाहिए, तभी शेयर होल्डर खुश होंगे, तो प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होगा. प्राइसेस अगर शेयर होल्डर्स को लग रहा है कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो ऐसे कंपनी के शेयर्स में डिमांड आएंगे तो प्राइस बढ़ेगा. एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी खुश, कंपनी भी खुश, प्रमोटर भी खुश, और डेट के लिए रीपे करने पैसा भी होगा तो बैंक्स भी खुश. एवरीवन इज हैप्पी. और एंड कैश फ्लोज भी है, तो दैट इज सो मेनली योर रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड कैश फ्लोज. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट. रेस्ट ऑल decent होना चाहिए. And there are dividend yields, there are couple of more things that we will discuss, and then probably आप ये भी factors आप देख लोगे. आप देख लो, अगर आपके 100 कंपनी है तो by the time you do this, at least you will have 10-15 companies in your hand, and that is what we want. We don't want to invest in 100-150 companies. We have to find out some good companies जो numbers में दिखता है कि ये the numbers are pretty strong here. So let's okay, just give me a random stock name. We look at the FI holding. So let's look at Infosys. तो अगर आप Infosys की बात करें, आप नीचे जाओगे तो आप देख सकते हो FIIs का होल्डिंग पैटर्न क्या है. 33% is what FIIs have been holding in March 2025. Then they came to 31, 30 and 30.27. आप देखोगे from almost 35% in 2023, FIIs have been kind of regularly bringing their stakes down. ये 2023 से अगर आप FII का स्टेक देखोगे, वो भले ही कम हो रहा है बट धीरे धीरे घटते जा रहा है. क्या FIIs को पहले से ही मालूम था कि ये AI थ्रेट होने वाला है पहले? See, that is the reason why you should be looking at all these parameters, because आपको थोड़ा आइडिया मिल सकता है. If you look at Laurus Labs का, we look at the FIIs. March 23, 22%, 24, 25, 26. Largely, it's remained consistent around. I think right now it's at the highest also, 26.52, which is good. That is a good holding. It's just that we need to see what the FIs are doing. Ideally, stable ho to theek hai. Whether they are increasing their stakes quarter on quarter or every once in 2 quarters, that is something that you need to see. Because if FIIs are putting in money, then chances are that they know something that retail traders don't know yet. बस वो ट्रेंड डिक्लाइनिंग नहीं होना चाहिए कि whether let's say stake is around 26 now. अभी Laurus Labs का stake is 26. Let's say next quarter it shouldn't drop to like 25, then probably 24, then probably in a couple of years it drops to 22. That is not the kind of trend that you want to see as far as the FIIs are concerned. A good FII participation in any particular stock, I mean, that is a welcome sign. Okay, so now let us start off with our question and answer. If you have any queries, any doubts, do let me know in the chat box. Sun Pharma is good. I think ये 1725 के ऊपर मिलना चाहिए, sustain close होना चाहिए. If we get a close above 1725, chances are that it can kind of move higher. A high so हो सकता है कि थोड़ा सा, then you have to look at the trend of the price as well, whether the price has already reached a peak or you still see value in that company, and chances are that FI का holding और भी ऊपर जा सकता है.
ratio chart of Laurus Labs by Nifty. We can do that. So Laurus Labs by Nifty, it's breaking out. You see, if you look at the chart here, there was here Laurus Labs was kind of underperforming, and now it seems like Laurus Labs is trying to outperform Nifty here. Okay. जस्ट अ सेकंड बलबीर जी, एक पल्लवी मैम का इन्फोसिस था ना, इन्फोसिस सी आई थिंक इसका चार्ट स्ट्रक्चर वीक है. आई फील till the time we are below 1500, the overall trend is likely to remain bearish in Infosys. I feel Laurus Labs can go up. I think a consolidation breakout भी मिल रहा है. I think if it sustains about 1025, chances are that it can move higher. बलबीर जी, आरआरजी के ऊपर ना मैंने एक डिटेल वेबिनार लिया हुआ है, आप देख सकते हो एसबीआई सिक्योरिटीज के यूट्यूब चैनल में, हाउ टू फाइंड ट्रेंडिंग स्टॉक्स यूजिंग आरआरजी. सो बेसिकली यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट आपको दिखेंगे: इंप्रूविंग क्वाड्रेंट, लीडिंग क्वाड्रेंट, वीकनिंग क्वाड्रेंट एंड लैगिंग क्वाड्रेंट. वाई एक्सिस पे आपको मोमेंटम दिखेगा, एक्स एक्सिस में आपको स्ट्रेंथ दिखेगा. बेसिकली ये आपको बताता है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स है और ये ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये मूव होते हैं. सो अगर अभी आप देखो ये स्टॉक, अभी एक सेक्टर रियलिटी इंप्रूविंग में था, वो लीडिंग में आ गया, हो सकता है आगे जाके वीकनिंग हो फिर लैगिंग हो. अभी कोई पर्टिकुलर सेक्टर अगर लीडिंग क्वाड्रेंट में है, मतलब वो सेक्टर में स्ट्रेंथ भी है, मतलब वो निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा है, और वो सेक्टर में मोमेंटम भी है. अगर वीकनिंग क्वाड्रेंट में है कोई सेक्टर, मतलब वो सेक्टर में स्ट्रेंथ तो है बट मोमेंटम कम होते जा रहा है, जैसे हमने मेटल और सीपीएसई में देखे. लैगिंग मतलब जैसे आईटी है, इसमें ना स्ट्रेंथ है ना मोमेंटम है, तो ऐसे सेक्टर्स को अवॉइड करना चाहिए. और अगर लैगिंग से इंप्रूविंग हो रहा है, मतलब मोमेंटम आ रहा है, स्ट्रेंथ अभी तक आया नहीं है, बट देयर इज सम क्वाइट मोमेंटम दैट इज बिल्डिंग अप हियर. सो इट बेसिकली आपको अगर पता चल गया कि हाँ कौन से सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, फिर वो सेक्टर्स के अंदर आप स्टॉक्स देख सकते हो. सो जैसे आईटी वीक है तो प्रॉब्ली आप ऑन द वीकर साइड आप एक सेल अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो आईटी में. बट अगर फॉर एग्जांपल हमने देखा पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज लीडिंग क्वाड्रेंट में, तो ऐसे सेक्टर्स में आप बुलिश एंट्रीज आप देख सकते हो. तो इट हेल्प्स अस टू सी कौन सा सेक्टर्स स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सेक्टर्स वीक है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन जीरो डाउन ऑन दी स्टॉक्स हियर. मैंने हाल ही में 2 हफ्ते पहले एक डिटेल सेशन लिया था आरआरजी में, आप एसबीआई सिक्योरिटीज के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो. पूरा अपने पूरा एनालाइज किया और बाद में वी हैव पिक्ड आउट ऑन जीरो डाउन ऑन स्टॉक्स एज वेल, हर एक सेक्टर्स के. इसके बाद हम स्टॉक्स भी कैसे देखते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है, तो आप देख सकते हो वो वाला सेशन. आई थिंक आपको काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. Is there any way to minimize theta decay in option buying? RRG का फुल फॉर्म इज रिलेटिव रोटेशनल ग्राफ, बिकॉज आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है, राइट. सो निफ्टी बाय रियलिटी रिलेटिव बेसिस पे निफ्टी से अंडर परफॉर्म कर रहा है कि आउट परफॉर्म कर रहा है. सो आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिव रोटेशनल ग्राफ, बिकॉज द सेक्टर्स कीप रोटेटिंग फ्रॉम वन क्वाड्रेंट टू द अदर क्वाड्रेंट, एंड दिस इज अ ग्राफ. एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है. सो आरआरजी स्टैंड्स फॉर रिलेटिव रोटेशनल ग्राफ. टीटा डी के ऑप्शन बाइंग में बहुत मुश्किल है प्रीत जी करना. मे बी यू कैन गो फॉर हेजिंग, जैसे यू कैन गो फॉर कैलेंडर स्प्रेड्स, जहाँ पे हम करंट एक्सपायरी का सेल करते हैं और नेक्स्ट एक्सपायरी का हम बाई करते हैं. दैट इज टेकन टू टेक एडवांटेज ऑफ टीटा डी के. बट in what way you can minimize, it's very difficult to minimize theta decay because option buying का सबसे बड़ा risk is theta decay only. The only way to go for it is to probably go for hedge strategies here. ठीक है. I think we are doing one webinar on calendar spread. So कल 4 to 5 is where we'll be having a webinar on calendar spread. So do attend that, PG. Probably it will help you, at least solve that problem at least to some extent. Yeah, relative rotation ka. Is it possible to authorize another person? I'm not sure about that, Harish ji. Do you have a SBI Securities account? I need to get it checked with my team. Give me a day. I think I'll get back to you on this by tomorrow. अभी क्या कर सकते हैं इन्फोसिस में? आई थिंक अभी आप एसएल लगा के आप होल्ड कर सकते हो. आई थिंक इसमें कुछ करने जैसा वैसा कुछ है भी नहीं. आई थिंक एक 1340 का वेसल रख सकते हो पल्लवी जी. अगर इसके नीचे जाता है देन आई थिंक इट्स बेटर टू एग्जिट, बिकॉज इसका ट्रेंड काफी वीक है, एंड ये फॉल के वजह से चार्ट स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट काफी पूरा चेंज हो गया है यहाँ पे. सो आई थिंक ये 1340 का आप ये कर सकते हो. आईसीआईसीआई बैंक
See, I feel ICICI Bank, despite the FI holding being high, you see the overall price trend is kind of sideways. I think if it kind of ICICI breaks above 1440, now let us see ICICI Bank. You should see relative basis पे FIIs का क्या trend रहा है. Let's see. FIIs, what have been they doing? March 2023, 14%. From acha, 44%. It's not 14%. So if you see, it's more or less it's stable. 44, 44, 43, 45, 46, 45, 45, 46, 43. Oh, so from 46, they have gone down to 43 here. So the highest that they've been was 46.2, 46.77. So last 2 quarters, they've been selling ICICI Bank. So थोड़ा सा हल्का हुए FIs यहाँ पे. I think next quarter again, if this improves, let's say 43.87, it goes to 44.5. And let's say ICICI Bank breaks out of this, then एक अंदाजा लगा सकते कि शायद कोई ना कोई FIs ये level पे यहाँ पे would have entered here. So that's how you relate price movement with the FI trends. Gabriel India. Gabriel India, I think avoid. इसमें momentum नहीं है फिलहाल. I think you need a strong close about 1075, 1080. I think once you get that, then chances are that the stock can move higher. What is the stop loss? Sun Pharma. First, it needs to close above 1720. Maybe you can have around 1700. You can consider that as जा सकता है 1780 तक. I think ये it needs to go out of this zone here. 1725, 1730 के ऊपर एक breakout आता है और continue होता है, then chances are that it can move. 1700 का आप ऐसे लगा सकते हो. CG Power is good, very good. I think it's also moving out of the range here. I think 675 is where you can keep your support for CG Power. LTF good, but I feel wait for LTF to move above 310. I think once in a congestion area, I think once it moves above 310, chances are that it can move higher. Union Bank is good. Like I said, the overall PSU space is doing well. So Union Bank of India. Very good. You can consider holding with 185, 186 as support for Union Bank. Very good chart. Azad Engineering, yeah, good. I think भले एक strong trend है. But if you see, there is a multiple resistance around the 1760 mark. Resistance 1, 2, 3. तो हो सकता है फिर से यहाँ पे resistance ले. But अगर ये 1760 break होता है, then I think chances are that it can go up. Hind Copper avoid. इसमें फिलहाल के लिए तो momentum नहीं है. I think it needs to hold 550. आज भले ही 550 से एक pull back आया है, but I think below 550 it's better to exit. Shriram Pistons. It's in a range. I think for an up move, it needs to move above 3,270, 3,280. I think I think immediate support is around 2,930, 2,950. I think below that, there can be some weakness here. BSC फिलहाल के लिए अवॉइड करना. यहाँ पे मैंने बोला था आपको एक स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू आता है तो ये गैप फिल हो जाए. बट आई थिंक जब तक हम 2830 के नीचे है तब तक it can be sideways to bearish. L&T is good, very good. I think L&T infrastructure as a whole is doing well. So L&T yesterday it gave a fresh breakout. I think you can trail your support to around 4,200. And as long as Larsen and Toubro stays above the 4,200 mark, the overall trend again is likely to remain bullish. FinTech. Wait for a breakout about 1060. It's एक lower lows, lower high formation में move हो रहा है. I think any break above 1060, I think that could trigger some upside in this stock here. Until then, it's better to avoid. Okay, so I guess that's a wrap of today's mid-market session. I hope it was informative.
And we'll meet again tomorrow. So tomorrow is Sensex weekly expiry. Tomorrow we are also having a webinar from 4 to 5. I'll be doing a session on calendar spreads. Interesting setup. So we'll meet first at 12:30 for our mid-market session on SBI Securities YouTube channel. And then again, we'll meet at 4 to 5 again on SBI Securities YouTube channel, guys. Until then, bye, guys. Take care. Stay safe. And I'll see you tomorrow. Take care, guys.